Good morning students, welcome to your today's English class. So students, in last class we have started with the new chapter from your English reader textbook, the chapter number 7, the polite Goldilocks. And in last class we have finished till page number 63, and in today's class we are going to start with the new page from the same chapter, that is page number 64. Okay, so before starting I would like to revise what we have covered in the last class. So in last class we have discussed the new chapter, that is the polite Goldilocks. It is the story about the little girl whose name is Goldilocks, who was very polite in nature. One day when Goldilocks went in a woods to collect the flowers, she felt hungry and she saw one cottage in which 3 bears used to live. Although she was very hungry, so she decided to have the porridge from those 3 bowls which were kept on the table already. So she tasted the porridge from the first bowl and the porridge was very cold. Then she tasted the porridge from the second bowl, which was medium in size, and that porridge was also very hot. Then she decided to taste the porridge from the small bowl, and that porridge was perfect in taste and she found it very tasty and she finished all the porridge from that bowl. So हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कल कि गोल्डीलॉक्स जो है वो फ्लावर्स कलेक्ट करते करते जंगल में बहुत दूर तक चली जाती है और वहाँ पे उसको एक छोटा सा कॉटेज मिलता है, जिस कॉटेज में 3 बेयर्स रहते थे. बट जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो वो बेयर्स उस कॉटेज में नहीं थे और वो बहुत दूर चल के आती है. इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा भूखी होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है. तो उसको भूख लगती है, इस वजह से वो क्या करती है, वहाँ पे एक टेबल पे 3 पॉरेज के बॉल्स रखे होते हैं, उसमें से का पॉरेज वो खाना शुरू करती है. तो सबसे पहले वो जो सबसे बड़े आकार का बॉल था, कटोरा था, उसमें का पॉरेज टेस्ट करती है. तो वो पॉरेज ठंडा था. फिर वो मध्यम आकार का जो कटोरा था उसमें का पॉरेज टेस्ट करती है, वो पॉरेज बहुत ही ज़्यादा गर्म था. फिर वो जो सबसे छोटे आकार का कटोरा था उसमें का पॉरेज खाती है. वो पॉरेज उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, इस वजह से वो पूरा का पूरा पॉरेज खा के ख़त्म कर देते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट page, that is page number 64 from this chapter, and we will see what happens next in this story. Okay, I will read till this line. Okay, first, feeling tired, she sat down on the biggest chair there, but found it too high for her. Okay, so students, you also read along with me. Okay, so she tried sitting on the smaller one, but found that high too. So she tasted the porridge from all the 3 balls and she had the porridge which was in the smaller ball completely. उसने क्या किया, तीनों बॉल्स में से पॉरेज टेस्ट किया, बट उसको छोटे जो कटोरा था उसमें का पॉरेज सबसे अच्छा लगा, इसलिए वो पूरा का पूरा उसमें का पॉरेज खा गई. अब उसके आगे क्या होता है, सी इन दिस, feeling tired she sat down on the biggest chair there. So जैसे कि गोल्डीलॉक्स बहुत दूर तक चल के आई थी जंगल में जब वो फ्लावर्स कलेक्ट कर रही थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उसको भूख भी लगी थी और वो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी. इसी वजह से वो वहाँ पे एक सबसे बड़ी चेयर थी उस पर बैठ गई. ओके, सो द गोल्डीलॉक वॉज ऑलरेडी वेरी हंग्री बिकॉज शी हैड अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स वाइल सर्चिंग फॉर द flowers, and due to that she felt very tired as well. So she decided to sat on the biggest chair which was kept over there. But once she sat on that chair, what she found, that chair was very high for her, or that chair was at very much of that chair was at very much that chair was quite big for her टू सिट. जब गोल्डीलॉक्स ने डिसाइड किया कि वो अब थक गई है, वो एक चेयर पे बैठेगी, कुर्सी पे बैठेगी, तो उसने सबसे बड़ी कुर्सी
सिलेक्ट किया अपने बैठने के लिए, और वो जो कुर्सी थी वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी, इस वजह से वो वहाँ पे कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रही थी. ओके, so she tried sitting on the smaller one but found that high too. So she tried the biggest chair. That was too high for her. That was very uncomfortable for her to sit on the biggest chair because her height was smaller than the chair and she couldn't sit on that chair properly. Then she decided to sit on the smaller chair which was smaller in the size than the earlier chair. Okay, तो उसने क्या किया, जो दूसरी पहली वाली चेयर से जो सबसे बड़ी थी उससे जो थोड़ी सी कम हाइट में चेयर थी, उससे जो थोड़ी सी छोटी चेयर थी हाइट में, उस पर बैठने की उसने कोशिश की, बट वो भी चेयर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी या हाई थी. हाई मीन्स ऊंची. ओके, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो ऊंची लगी उसको वो बैठने के लिए. देन when she sat on the smallest chair, she said, "This is just right for me." But just as Goldilocks sat down on it, the chair broke into pieces. So, in this line, when she sat on the smallest chair, she said, "This is just right for me." So, Goldilocks wanted to sit on the one of these 3 chairs, but she tried biggest chair first. That was too high for her. Then she tried sitting on the smaller chair which was smaller in size than the biggest chair, but again that chair was also high for her. Then she sat on the smallest chair over there. Smallest chair means जो सबसे ज़्यादा छोटी थी, उस पे वो बैठ गई, and that smallest chair was just perfect for her and she found it very comfortable for sitting. And once she sat on that chair broke into pieces. Okay, तो गोल्डीलॉक ने सबसे छोटी चेयर पर बैठ के ट्राई किया तो उसको वो चेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, अपने लिए एकदम परफेक्ट लगी बैठने के लिए. उसको वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक लगी, ना ज़्यादा लंबी थी ना ज़्यादा ऊंची थी, ना ही उसको छोटी लगी वो हाइट में. उसके हाइट के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए आरामदायक लगी. और जैसे ही गोल्डीलॉक्स उस चेयर पर बैठ गई, वो चेयर क्या हो गई, वो चेयर टूट गई. ओके, नेक्स्ट. Feeling sleepy now, Goldilocks thought she would lie down on one of the beds there. The biggest one was too hard. The smaller one was also quite hard. But when she lay down on the smallest one, she cried out, "This one is so comfortable." Soon she was fast asleep. So, after sitting on the chair, Goldilocks felt very sleepy. So, she decided to sleep on the one of those beds which were already there in the bear's cottage. Okay, so first she slept. First she tried to sleep on the biggest bed over there. But once she slept on that biggest bed, she found that bed was very hard. Then she tried to sleep on the smaller bed, but that was also quite hard for her. Then finally she chose the smallest bed to sleep, and what she found over there, she found that bed was very comfortable for her to sleep, and then she finally falls asleep on that bed. Okay, तो गोल्डीलॉक्स क्या करती है, गोल्डीलॉक्स को अभी बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, तो वो क्या करती है, वो जाती है बेर के घर में जहाँ पे 3 बेड रखे होते हैं. तो उसने सबसे पहले जो सबसे बड़ा बेड था उसके ऊपर सो के ट्राई करती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको हार्ड फील होता है उसके ऊपर सोने से. उसको हार्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा वो उसको आरामदायक नहीं लगता है, वो मुलायम नहीं लगता है उसको, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है उस पर सोने से. तो वो जाती है फिर उससे भी जो कम साइज़ में था, जो कम साइज़ का बेड था उस पे जाके सोती है. जो बिगेस्ट जो सबसे बड़ा था उससे थोड़ा कम साइज़ का जो बेड था उसके ऊपर जाके सो के ट्राई करती है, तो वो भी वैसे ही था, वो भी थोड़ा सा हार्ड ही था बेड. फिर वो जो वहाँ पे सबसे छोटा बेड था उसके ऊपर जाके सोने की कोशिश करती है, तो उसको क्या महसूस होता है, वो जो बेड था वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल था, सबसे ज़्यादा आरामदायक था. तो उस पर वो बैठते ही उसको
नींद आ जाती है और वो वहाँ पे सो जाती है. सो हियर इज द न्यू वर्ड कंफर्टेबल. कंफर्टेबल मीन्स कोजी. कंफर्टेबल मीन्स एट योर ईज. कंफर्टेबल मतलब कोई भी चीज़ जो हमें आरामदायक लगती है, आराम देती है, उसको क्या बोलते हैं हम? कंफर्टेबल. या हम कोई भी चीज़ जो इजीली कर सकते हैं, हमारा उसमें आसानी होती है, हमें कोई भी काम करने में आसानी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंफर्टेबल, कोजी. ओके. When the bears got back and saw the mess around, they wondered who had done it. Hearing the noise, Goldilocks woke up. Seeing the bears, she ran out in fright. Okay, so here is one new word, mess. Mess means untidy place. Mess मतलब बहुत ही ज़्यादा इधर उधर फैला देना, गंदगी मचाना, उसको क्या बोलते हैं? मेस. अनटाइडी प्लेस. अनटाइडी मीन्स बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त वाली जगह को हम बोलते हैं अनटाइडी प्लेस. ओके, मेस. सो गोल्डीलॉक्स was asleep on that smallest bed. Then after few minutes, those bears came back to their house, and what they saw over there? They saw the mess around their house, and they wondered who did it. Wondered means they were curious कि किसने किया होगा. Curious. Wondered मतलब curious. या वो अचंभा हो गया उनको, कि अचंभा या उनको आश्चर्य हो गया कि ये किसने इतना ज़्यादा हमारे घर में अस्त व्यस्तता फैलाई है, ये कौन है जिसने हमारे घर में इतनी गंदगी फैलाई है. जैसे ही वो घर आते तो उनको दिखता है कि हमारे घर में एक चेयर टूटी है, हमारे पॉरेज के बॉल्स में से पॉरेज ख़त्म है ना, और सब जगह गंदगी फैली हुई है, अस्त व्यस्तता फैली हुई है. तो वो लोग वंडर्ड मतलब उनको आश्चर्य होता है कि ये किसने किया है. दे वर क्यूरियस टू नो अबाउट इट, हु हैड डन ऑल दिस मेस इन देयर हाउस. ओके. सो hearing the noise, Goldilocks woke up. The meaning of this line is hearing the noise मतलब जैसे ही शोर शराबे की आवाज़ आने लगी तो गोल्डीलॉक्स अपने नींद से उठ गई. Once the bear came back to their house, they started making some noise, and because of their noise, Goldilocks got up from her sleep. Seeing the bears, she ran out in the fright. So here is the new word, fright, and the meaning of this word fright is a sudden feeling of fear. A sudden feeling of fear. Fright means to fear, डरना, बहुत ही ज़्यादा डरना. Okay. So Goldilocks was asleep, and because of the noise which was made by these bears, she got up from her sleep, and once she saw those bears in front of her, she got scared and she started to run out of the fear. जैसे ही गोल्डीलॉक्स को शोर शराबे की आवाज़ आई तो वो अपनी नींद से उठ गई, और उसने उस नींद से उठते ही अपने सामने क्या पाया? उसके सामने वो 3 भालू खड़े थे, और उनको देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर गई, और डर के वजह से वो वहाँ से भाग चली गई. ओके. सो वी हैव फिनिश टिल दिस लाइन, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू discuss the next page, that is page number 65, and in today's class we have finished till the page number 64. Till then, thank you, have a nice day.